Hello students, I welcome you all in our next session of InMo question of the day. So far हमने बच्चों काफी questions कर चुके हैं इसके अंदर, right? So okay, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal, and we have talked many times, right? So I've been teaching for the past 8+ years, and you guys, I guess, must be knowing about me right by now. ठीक है? So this is for the students who are seeing this for the first time. Okay. So I've done my BTech from IIT Bombay, and so in the past 8+ years I have taught around about 4,000 to 5,000 students, including for the INMO, IOQM, JEE, and everything, right? All the competitive exams. So out of that, yes, some of my students have got 9 rank in IIT JEE in 2017. He got, right? And actually अब तो उनका job भी लग गया है, right? So and one of them got 37 in the same year, and 37 was in 2015 and 81 was in 2017 only. So it was very good to teach such students. So guys, आज का session start करने से पहले I'll try to tell you one thing first. Okay, I'm going to tell you about what we are going to launch, okay, in April. So guys, in April again we'll be starting with our Maths Olympiad courses, pre-RMO courses from scratch. Okay, so if you guys have not, if you guys think कि आपने इस साल इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, ठीक है, या फिर इस बार नहीं हो पाया है, you got to know about it a little bit late or something, that you did not have a very good preparation, and let's say you joined us in our camp only and आपने पहले वाला कोर्स नहीं किया हुआ है, and if you wish to study from us in our next year and still intend to give pre-RMO in the next year, so you can give this test, which is going to be held on 26th of February. That is the first test that is going to happen. That is BOLT for maths, right? So on the same day you can give exams for other exams also, right? Other competition exams also, but उस दिन Maths Olympiad के लिए भी आप register कर सकते हो. So 26 February is the exam date. So you can register on this website vdnt.in/volt22yt. Okay, by using this link you can register for us, register for the test. Okay, because according to the scores in the test you will get scholarships or you will be getting admission in our course. So सब लोगों को कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, और you can say scholarship नहीं मिल पाएगा उससे, right? So that is the point. So you should, I would say कि आप लोगों को टेस्ट ये देना चाहिए, and also it will give you a very good standing कि आप कैसा कर सकते हो टेस्ट के अंदर, right? It will give you a very good benchmark for yourself, ठीक है? So I'd suggest कि आप ये जाके टेस्ट दो. So please register on this link, right? Okay, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है? So let me show you the question first. This is the question. So let me read this. So two teams A and B, दो teams हैं A और B, which are participating in a table tennis tournament. Okay. So what is happening is there are 7 players of each team to engage in this tournament in determined order. ठीक है, हर टीम से 7 लोग हैं. both the teams there are 7 players and they have to engage with each other. Okay, the teams have to engage with each other और match play होंगे, but in a determined order. Like let's say first team के 7 player का एक order है, second team के भी 7 players का एक order है, right? So we can name them actually. A1, A2, A3 is the order of the players of team A. Let's say मैं नाम पहले से दे देता हूँ. A1, A2 up to A7 is the order in which the people from team A are going to come. So basically I name the players in the A team, A1 to A7. Similarly, you can say B1, B2 up to B7. These 7 players of team B will also come in a definite order. But होता क्या है? Let's read the question further. Firstly, first player of team A of A team plays against first player of B team. तो A team का first player, let's say A1, plays with B1, right? So first match जब होता है, so A1 versus B1 होता है. A1 versus B1 होता है, let's say. Now the winner will be playing the next match, but the loser will be eliminated. लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर that and the loser is eliminated. तो जब A1 और B1 का मैच होता है, जो हारता है वो एलिमिनेट हो गया है. So obviously we know that in this match there are 2 outcomes. Either A1 will win or B1 will win, and the loser will be eliminated, right?
ओके आगे क्या होता है, आफ्टरवर्ड द विनर प्लेज अगेंस्ट द सेकेंड प्लेयर ऑफ द अनदर टीम, मतलब जो जीत रहा है ना वो आगे दूसरी हारने वाले लोगों से आगे बढ़ता जाएगा. लाइक I will give you an example. This is just an example of one case. Let's say A1 versus B1 हुआ. A1 win the match. Next match will be A1 versus B2. Right? So again, then there could be some outcome. Either A1 or B2 will be the outcome. Right? So इस तरह से आगे चलता रहेगा. अब second match जो जीतेगा, जो हारेगा, वो बाहर हो जाएगा. And the winner will play the next person of the other team. Right? So this is said that on subsequent steps, the play is similar, right? It just goes on like this. Thus, the game does not end until all players of some team are eliminated. तो बच्चों इसका मतलब क्या है, तब तक चलता रहेगा ये प्रोसेस जब तक कि एक टीम के सारे प्लेयर्स एलिमिनेट नहीं हो जाते, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है? सो then the number of distinct processes of the game is. So now what does this mean by the number of distinct processes of the game? ओके, डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस का मतलब है, लाइक आई हैव शोन यू एन एग्जांपल. वन एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको. सिंपल एक केस, A1 वर्सेस B1 जो मैंने लिखा हुआ है, A1 जीत गया. लेट्स से इन द नेक्स्ट मैच अगेन A1 विंस. मैं एक केस बता रहा हूं आपको. सो वन सच प्रोसेसेस, हर बार A1 ही जीतता गया, सारे के सारे मैच A1 नहीं हरा दिए B वालों को. सो दैट इज अ वन प्रोसेस, जस्ट वन प्रोसेस, ठीक है? अनदर प्रोसेस कुड बी कि A1 ने B1 को तो हरा दिया, बट द नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ A1 विनिंग B2 जीत गया, तो A1 बाहर हो गया. सो द नेक्स्ट मैच विल बी B2 वर्सेस A2, राइट? तो नेक्स्ट मैच फिर ऐसा होना पड़ेगा. देन अगेन देयर विल बी सम आउटकम, एंड चलते चलते जब तक फाइनली कोई जीत नहीं जाता एक टीम. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वन प्रोसेस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू काउंट देम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा. ओके, अनलेस यू क्लिक ऑन द राइट प्रोसेस, मतलब सही मेथड अगर आपने सोचा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी है. अदरवाइज, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट, तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अब आप ऐसे केस बनाते रहोगे, बिकॉज सिंस द टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल आल्सो नॉट बी फिक्स्ड, है ना? आप ऐसे नहीं सोच सकते. देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से A1 ने सबको ही हरा दिया, तो कितने मैचेस ओवरऑल हुए? सो देन इट इज टोटल ऑफ 7 मैचेस दैट टुक प्लेस. A1 ने सबके साथ मैच खेला और सबको हरा दिया, है ना? देन देयर कुड बी अनदर केस कि A1 जीत गया पहली बार में, लेकिन दूसरी बार B2 जीत गया, जैसे मैंने शो किया आपको, है ना? लेट्स से नाउ अगेन A2 विंस. अब का क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि A2, मान लो मैं इसके बाद एक केस बताता हूं आपको, A2 सारे मैच जीत रहा है इसके बाद. सो इसका मतलब A2 ने B2 को हराया, ठीक है? B2 से लेके उसने B7 तक को हराया, तो कितने मैच हो गए? सो देयर वर 6 मैचेस, दीज आर 6 मैचेस, और 2 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं इससे पहले, टिल A2 केम, राइट? सो 8 मैचेस आर टेकिंग प्लेस. So basically the total number of matches are also not fixed. तो आप उसको सीधे सीधे ऐसे भी नहीं काउंट कर सकते, right? So let's think about what would be the best way to find the answer. Okay, उसके लिए let's assume we are talking about the cases when team A wins, right? देखो A and B are very much symmetric, right? If I find the number of ways in which team A wins, है ना? So there will be that many cases also in which team B wins. ठीक है, तो मैं एक टीम के जीतने के वेज ढूंढ लेता हूं, उतने ही बी के होंगे. सो टोटल हम ऐड कर देंगे, ट्वाइस हो जाएगा ओवरऑल, राइट? सो लेट्स अज्यूम टीम ए विंस. इसके केसेस हम सोचते हैं, ठीक है, दैट टीम ए इज विनिंग. सो बच्चों अगर टीम ए को जीतना है, राइट, नाउ लेट मी नेम द वेरिएबल्स, राइट? लेट्स से द नंबर ऑफ मैचेस A1 विंस, नंबर ऑफ मैचेस A1 wins, let's say that is X1, right? X1 is the number of matches that A1 wins. Similarly, number of matches that A2 wins, let's say that is X2, right? So just like this till A7, every person, let's say that is X7. Now I'm defining these X1, X2 up to X7, the variables. ये क्या define करते हैं? X1 shows you how many matches A1 wins. तो जो टीम ए का फर्स्ट प्लेयर है वो कितने मैच जीतता है. X2 शोज A2 कितने जीतता है, एंड सो ऑन टिल X7 शोज कि A7 कितने जीता, राइट? सो नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट्स से टोटल नंबर ऑफ विंस कितनी होंगी, विंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. इफ टीम ए हैज टू विन ओवरऑल, सो टोटल नंबर ऑफ विंस, इन सब की विंस मिला के A1 A2 अप टू A7, सब लोगों की अगर मैं विंस को ऐड कर दूं,
that should add up to 7 because 7 मैचेस से ज्यादा तो नहीं खेलेंगे ना, right? If they are winning, and these are not the number of matches, these are the number of wins. तो 7 wins से ज्यादा तो नहीं चाहिए, 7 wins में तो आप वो जीत जाएंगे, right? उससे कम में वो जीत नहीं सकते. They need 7 wins overall. 7 wins का मतलब है हर बार एक विन में एक प्लेयर टीम बी का एलिमिनेट होता है, right? So they have to eliminate 7 people. So they have to have 7 wins. So what does this give us? That x1, x2, x3 ये सब क्या है? Wins हैं, right? So that means we have to find the number of solutions to this thing. x1 plus x2 plus x3 up to x7 should add up to 7, right? Total number of wins they required is 7. And in this thing, negative तो नहीं हो सकता x2, x3, but 0 हो सकता है. 0 का मतलब क्या है? वो बंदा या फिर वो प्लेयर एक भी मैच नहीं जीता, right? So all we have to do, कितना सिंपल ये बन गया क्वेश्चन अगर हमने इस तरह से डिफाइन किया. All I have to do is find the number of solutions of this linear equation, right? So that the sum of 7 variables is adding up to 7. And I guess everybody knows this, to use beggar coin method, right? So I have to insert 6 partitions between 7 coins, right? So the number of ways to distribute 7 wins among 7 people, right, is how much? 7 plus 6 partitions, C6. So that is 13C6, right? So 13C6 is the total number of ways in which team A will win, right? Different processes in which team A will win. So now guys, very much symmetric. I told you कि team B के जीतने के भी कितने ways होंगे? उतने ही होंगे जितने ये जीत रहे हैं, right? In the same way, I could do this thing for team B also. ठीक है? तो total ways कितने होंगे इससे? So the total answer, final answer, total will be 2 times 13C6. Now you can go on to find 13C6. I will make use of the calculator. Okay, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. So 13C6 is 1716 into 2. अगर आप करते हो, your final answer should be 3432 processes. So guys देखो कितने सारे processes बनेंगे या फिर कितने सारे ways से वो हो सकता है ऐसा. So 3432 will be your final answer. Let me write it. Right, that is the number of ways in which team A or team B will win, and or you can say total number of ways it can go down, right? The whole way, जो 7 लोग खेल रहे हैं, the whole thing can go down in 3432 ways. So guys, this was a question of China National Mathematical Olympiad competition, right, of 1988. So it's kind of INMO level problem, right? Although आज की डेट में थोड़ा INMO और ऊपर चला गया level, but yes, at some time you would say कि ये INMO level का problem था. So yes, the point is कि आपको process के ऊपर follow करना है, like this algorithm or you can say this method. अगर ये method strike नहीं करेगा, then you'll be like very much, you know, struggling to solve the question, right? I hope this thing is clear to everyone, right? And I hope आप सबने कुछ सीखा इस यहाँ से, right? So thank you everyone. I want to bring to your notice again this thing. If you guys are interested for Maths Olympiad for the next year also, okay, 2022-23 session, so you can enroll in our courses by giving this exam called Volt. Okay, so for that you have to visit this link. Okay, let me highlight it. You have to visit this link, okay, and register for the test. So test is going to happen on 26th February. Okay, so all the best for the test and best of luck for the coming exam also. Okay, we'll see you in our sessions. I hope to see you guys in our sessions. Okay, so please register. And thank you, and I hope everybody got to learn something new through this question that we did today. Okay, bye guys, thank you.